जिस तरीके से ज्यादातर भारतीय आबादी, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, think about risk needs to be changed. The only real risk, according to me and according to various other people, is death. The only real risk in your life is death. Why do I say so? See, because understanding this made me realize that we as a community take our mistakes, our failures, our errors too seriously. Some people end their lives due to exam pressure. Some people end their lives due to bankruptcy and some over love affairs. Understanding this and इसको एज अ कॉन्सेप्ट हम कैसे समझ सकते हैं? दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ स्किन इन द गेम लॉजिक, विच मीन्स if a mistake doesn't harm your life, if a mistake won't actually kill you and isn't fatal, then everything else is just data, a minor inconvenience, or just a temporary setback in your life. You can always recover from everything you do. तुम अगर खुद सोचो इस बारे में, so doesn't it make sense? You can build everything from the ground up. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम जीरो. अगर तुम खत्म नहीं हो जा रहे हो, यू आर स्टिल इन द गेम. You can still participate, you can still build whatever you want to build, you can still do what you want to do. This understanding of risk needs to be changed. India as a country, as a population, has so much fucking potential, but this risk measuring technique of ours is doing such great damages to this country, to this economy, that we don't even realize it. And let me remind you again, when you look at things this way, that the only real risk is something that is fatal to you, or the only real risk in life is death, something crazy happens to your risk or your fear tolerance. Your downside of a project gets capped. That is the first thing that happens to your fear tolerance. The downside gets capped. What I mean is your embarrassment. तुमको लग रहा है अरे भाई हमने ये कुछ कर दिया, अरे भाई मरने को हो रहा है. नहीं. Your embarrassment, losing money, a failed project, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, a bad pitch of your startup. These things stop looking like monsters and they just look like variables, or they just look like steps in your way. ठीक है, every failure is a step towards victory. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो, तुम चेंज नहीं कर रहे हो अपने आप को, देन फेलियर विल इवेंचुअली लीड टू मोर फेलियर. बट हाँ, एंड सेकेंड इज कि आपके दिमाग में तुम्हारे गोल्स एंड योर स्टेक्स गेट क्लियर. अगर तुम इस प्रकार से रिस्क को देखते हो जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इट डज इज इट आइसोलेट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन योर लाइफ फ्रॉम द नॉइज, फ्रॉम द सोशल एंजाइटी that usually prevents people from doing or accomplishing or even trying for their goals. If death is the only absolute certainty, every other challenge that you encounter along the way is inherently survivable and a catalyst for growth. See, whatever you do throughout your life, the only thing that is promised to you is your death. And हर चीज, हर एक ऑब्स्टिकल दैट यू एनकाउंटर अलोंग द वे इज एक्चुअली सर्वाइवेबल, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो प्रॉमिस्ड आउटकम जो हमने ले रखा है ना, वी नो कि वी हैव अ आउटकम, डेथ इज एन आउटकम. ठीक, उसके अलावा हर चीज एक स्टेप बन जाता है. ठीक है, हर चीज सर्वाइवल बन जाती है कि तुम, हाँ इससे तो हम निकल ही जाएंगे, ये तो जूझने की चीज है ना. तो अब हमने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश कर लिया है दैट द ओनली रियल रिस्क इज डेथ. भले ही it's like very great thinking of creating extreme leverage and taking massive swings in life, like बड़े बड़े तुक्के मार लो तुम, बड़े बड़े सट्टा नहीं लगाना चाहिए. But the thing is, we have to keep in mind this tiny caveat, which is asymmetry. अब asymmetry का concept क्या है कि there are certain things जो कि death नहीं होती है. There are certain things which are not your death, but these things will permanently cap your ability to participate and play in this game of life, such as destroying your reputation. ठीक है, reputation बनाने में बहुत वक्त लगता है,
लेकिन जब टूट जाती है तो वापस लाइक उसको रीगेन करना इज इवन मोर डिफिकल्ट. देन सेकेंड इज लूजिंग योर हेल्थ. हाथ तुड़वा दिया भाई, इवन दो लाइक इफ यू मैनेज टू लाइक गेट इट फिक्स्ड और समथिंग, still like you don't have your real arm, or like burning bridges with a handful of people that mean to you. ठीक है, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन्हीं के साथ भाई तुमने रिश्ते नाते तोड़ दिए. These are some things that I think will cause long term damage to you. Like short term में तुम्हें लगेगा अरे यार क्या यार लोग ही तो भाड़ में जाए, but in the long term these things will cap your abilities to participate in the game. ठीक है, क्योंकि बिना लोगों के, बिना अपनी रेपुटेशन के you aren't going anywhere. अकेले कितना ही कर लोगे तुम, कितने ही खेत जोत लोगे अकेले. As long as you are protecting your integrity, your health, the rest of the playing field of life is completely free. If the worst case scenario in your situation isn't fatal, if the worst case scenario in your situation doesn't lead to death, like absolute certainty है कि भाई जैसे तुमको पता है कि तुम किसी का so it is very very likely that you are going to end up, अगर तुम्हारा worst case scenario doesn't lead to eventual death, why hold back in your dreams? Well, that's it for this video. I know ये काफी अलग प्रकार की वीडियो थी और मे बी मेरी कुछ आने वाली वीडियोस ऐसी रहेंगी. देश को ऊपर लेके जाना है, लेगेसी क्रिएट करनी है. माय नेम इज भविष्य एंड दिस इज प्रोजेक्ट भविष्य. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट अलॉन्ग विद अस ऑन दिस जर्नी टू मेक आवर नेशन greatest again. I'll meet you in the next video. Till then, keep dreaming, keep doing. Bye.